मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। कल हम लोग पढ़े थे काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस। आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ फर्स्ट वर्ड है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड है पॉसेसिव प्रोनाउन। Possessive pronoun। तीसरा है reflexive pronoun। reflexive pronoun। reflexive pronoun। फोर्थ नंबर है emphatic pronoun। emphatic pronoun। emphatic pronoun। फिफ्थ है demonstrative pronoun। demonstrative pronoun। demonstrative pronoun। सिक्स नंबर है indefinite pronoun। indefinite सिक्स नंबर है indefinite indefinite pronoun। सेवेंथ नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एट नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नाइन्थ नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। 10 नंबर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। लिखेंगे I, we, you, he, she, it, and they are called personal pronoun। personal pronoun। personal pronoun। प्रोनाउंस हो जाते हैं, ठीक है ना।
एग्जाम्पल लिखेंगे I know her. I know her. इसमें I जो है वो प्रश्न प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में I प्रश्न प्रोनाउन है। I know her. नेक्स्ट है सेकेंड नंबर पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन, possessive pronoun लिखेंगे द प्रोनाउन the pronoun used to show position, the pronoun used to show position is called, the pronoun used to show position is called a possessive pronoun. Possessive pronoun. एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे This book is mine. This book is mine. इसमें mine जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। ये पोजीशन शो करता है कि ये पुस्तक है मेरी है, ये अधिकार बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 3 नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन the pronouns myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, and themselves, are called reflexive pronouns. The reflexive pronouns when the action done
when the action done by the subject, when the action done by the subject turns back upon the subject, on the subject. एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, I hurt myself, I hurt myself, I hurt myself. इसमें myself जो है वो रिफ्लेक्शन प्रोनाउन है. I hurt myself, I hurt myself. लिखेंगे सभी. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन. फोर्थ नंबर पॉइंट है एम्फैटिक प्रोनाउन. एम्फैटिक प्रोनाउन. myself, our selves, yourself, yourselves, selves, herself, himself, himself, itself, and themselves are called emphatic pronoun, called emphatic pronoun, emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis, sake of
emphasis. Sake of emphasis. एग्जाम्पल लिखेंगे I killed a tiger. I killed the tiger, my son. I killed the tiger, my son. I killed the tiger, my son. Next, define a fifth number. Fifth number point है demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. The pronoun used to join. The pronoun used to point out the object or objects to which it refers is called a demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. एग्जाम्पल लिखेंगे This is a boy. This is a boy. इसमें this जो है वह डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. this जो है वह डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है. आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और हम लोग 5 पॉइंट जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे. इसको सभी को लर्न राइट कर लेना है. अपने कॉपी में फेयर कॉपी में से सभी नोट कर लेंगे. ओके बाय.